Assalamu alaikum and welcome to Sir Sayyid Children's Academy, English Literature class of grade 8. It's your lecture number 2 and I'm your teacher, Miss Sabah. Dear students, we have studied Reading Comprehension 3, Chasing Dreams in our previous lecture. Today we will continue the same passage. Our story will start from 12 years later, where we left off. So let's see what happened next. Uncle Noor Ali, you should not eat rice, potatoes, and sugar. Jamil advised his patient politely. Okay, son, I will follow your advice. Jamil held the old man's weathered hand and helped him walk outside the impressive hospital building, standing against the backdrop of lush green fields. For a moment he looked up at the building that portrayed his dreams. He asked Aladino, are there any more patients? No, there are no more patients, replied Aladino. Okay then, call Dr. Sara so that we can go to the neighboring villages and examine the patients there. चचा नूर अली, आपको चावल, आलू और चीनी नहीं खानी चाहिए। जमील ने अपने मरीज़ को नहायत नरमी से मशवरा दिया। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल करूँगा। जमील ने उस बूढ़े शख्स का झुर्रियों भरा हाथ थाम लिया और अस्पताल की शानदार इमारत से बाहर निकलने में उसकी मदद की, जो सरसब्ज खेतों के पसे मंज़र में खड़ी थी। एक लम्हे के लिए उसने ऊपर इमारत की तरफ देखा, जो उसके ख्वाबों की तामीर नज़र आ रही थी। उसने अलादीनो से पूछा, क्या कोई और मरीज़ है? नहीं, कोई और मरीज़ नहीं है, अलादीनो ने जवाब दिया। ठीक है, फिर डॉक्टर सारा को बुलाओ ताकि हम पड़ोस के देहातों में जाकर वहाँ मरीज़ों का मुआयना करें। After visiting two nearby villages, Jamil dropped Sara at her house, where her two young children were waiting for her. Jamil was very happy because Sara had hosted a successful seminar for the village women and guided them to improve their personal and family health and hygiene. He then drove home in his small jeep, satisfied with the day's work. Come on, let's have lunch, said his wife, with a beaming smile. Lunch? You mean you people have not had lunch as yet? He exclaimed. No, we were waiting for you, said his parents simultaneously. Okay then, let's have lunch together. Everyone washed their hands one by one and moved towards the dining table. दो करीबी गांव के दौरे के बाद जमील ने सारा को उसके घर छोड़ा, जहां उसके दो छोटे बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे थे। जमील बहुत खुश था क्योंकि सारा ने देहाती ख़वातीन के लिए एक कामयाब सेमिनार मुनक्किद करवाया था ताकि उनकी ज़ाती और ख़ानदान की सेहत और हिफाजत सेहत के बारे में रहनुमाई की जा सके। दिन भर के काम से मुतमईन फिर वो अपनी छोटी सी जीप चलाते हुए घर गया। चलो आओ खाना खाते हैं, उसकी बीवी ने खिलती हुई मुस्कुराहट के साथ कहा। खाना? तुम्हारा मतलब है कि तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? वो हैरान था। नहीं, हम तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, वालदैन ने एक साथ कहा। ठीक है, फिर चलें, एक साथ खाना खाते हैं। एक एक करके हर एक ने अपने हाथ धोए और खाने की मेज़ की तरफ बढ़ गए। At night, Jamil lay on his charpai in the middle of the yard under the cool moonlit sky and thought about the long journey of his life and all the hardships that he, his sister Sarah, and their family had borne to fulfill their dreams. He felt truly grateful and blessed. रात को जमील सहन के दरमियान में ठंडी चांदनी से रोशन आसमान के नीचे अपनी चारपाई पर लेटा अपनी ज़िंदगी के तवील सफ़र और उन मुश्किलात के बारे में सोच रहा था जो उसने, उसकी बहन ने और उनके ख़ानदान ने उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए बर्दाश्त की थी। वो खुलूस से शुक्रगुजार था कि उस पर खुदा ने करम किया था। Finally, the passage ended with happy ending. So what do you think is the moral of this passage? In this story, we found out dreams only come true for those
who dare to dream and chase them their whole life and bear all the hardship come in their way. So that's all for today. Let's see what's your home task. In the first exercise of this passage, you will read the text again and write the answers of the following questions in your registers. How many characters are there in the story? You have to write their names. First, you will write the characters, means the quantity of the characters, how many are there, and then you will name them one by one. And remaining exercises of this comprehension passage will be given in the next lecture. So, dear students, that's all for today. Keep watching and keep learning with SSC official YouTube channel. And to do that, please subscribe now and press the bell icon to get notified about your new lectures. I'll see you in the next lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.